Hello friends, welcome to Swarn Biology. This is Dr. Swarnima Mishra and today we are going to deal with the asexual reproduction in the phylum Porifera. In the previous video, we have discussed about the sexual reproduction in this phylum, and today we are going to study in detail the asexual reproduction in the phylum Porifera. Now, earlier I have told you about the meaning of the reproduction. Reproduction means to produce more of its own kind. Now, in this reproduction, particularly we are going to talk about the asexual reproduction. Now, what does this asexual reproduction means? Asexual means without the involvement of the male and the female gamete. Means the organism reproduce more of its kind without the involvement of the gametes. That particular reproduction is known as the asexual reproduction. Then how these organisms they reproduce? They reproduce by the following processes, as we can see here. That is, first is by the budding, second is by fission, third is by formation of the reduction bodies, and fourth is by formation of the gemmules. So, जो asexual reproduction होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, लेकिन उसमें मेल और फीमेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. वो ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं इन प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि बडिंग के थ्रू बनाते हैं, फिशन के थ्रू बनाते हैं, रिडक्शन बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं और जेम्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के थ्रू वो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ the very first process that we are going to study in the asexual reproduction is the budding. Now, as we can see here that this is the outgrowth. This outgrowth, as we can see here, which is attached to the parent body, and this particular outgrowth is known as the bud. Now, this particular outgrowth, it can grow into new individual while attaching to the parent body, or this bud can detach from the parent body and could grow independently after finding a suitable substratum. It gets attached to that substratum and grow into the individual. So, after the budding process, the organisms can grow into an individual either by attaching to the parent body or by detaching from the parent body and growing independently. Now, what does this process of budding involves? How this budding occurs? Now, as you see here, that numerous archaeocytes collect at the surface. Now, we all know what are archaeocytes. We are very much aware of this archaeocytes. These are the totipotent cells which are present at the mesenchyme layer, or we can say the mesohyle layer of the sponges in between the pinacoderm and the quanoderm. And these archaeocytes, they differentiate to form the new organism. So these archaeocytes, they collect at the surface of the at the surface, and the pinacoderm bulges out to receive them, forming a structure called bud. Now, as we can see here, that suppose this is your quanoderm. Suppose these are the mesenchyme where the archaeocytes resides. Suppose this is mesenchyme and this is your pinacoderm. Okay. Now, these archaeocytes, they collect at the surface. So, when these archaeocytes, they move towards the surface, these pinacocytes, they bulges out. So, the structure of the pinacocytes, it bulges out, and these archaeocytes, they gets aggregate here. Aggregation of these archaeocytes takes place in this bulging pinacoderm. So, this particular bulging pinacoderm transforms into the bud structure. Okay. So, The bud so formed grows into an adult individual, either remains attached with the parent body
or detach with parent body and develops independently into an individual. तो अगर हम प्रोसेस ऑफ बडिंग की बात करेंगे इन स्पॉन्जेस में, फाइलम पोरिफेरा में, तो हम देखेंगे कि जो आर्कियोसाइट्स होती हैं जो कि मीजनकाइम लेयर में देखने को मिलती हैं, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि मीजनकाइम लेयर में जो आर्कियोसाइट्स हैं और सेवरल अमीबोसाइट्स जो हैं वो यहाँ रिसाइड करती हैं, एंड वन ऑफ द टाइप जो है वो आर्कियोसाइट है. तो ये आर्कियोसाइट क्या करती हैं, ये कलेक्ट होने लगती हैं आउटर सरफेस के थ्रू, जहाँ की पिनाकोडर्म हमें देखने को मिलता है. और जैसे जैसे ये कलेक्ट होने लगती हैं आउटर सरफेस के थ्रू, तो जो आउटर लेयर होती है पिनाकोडर्म स्पॉन्जेस की, वो बल्ज आउट करने लगती है, वो बाहर की तरफ निकलने लगती है. तो जैसे ही वो बल्ज आउट करती है, और उस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, बड कह देते हैं. तो और जो बड ये फॉर्म होता है वो या तो पेरेंट बॉडी से अटैच होता है और एक इंडिविजुअल में फॉर्मेशन कर लेता है, या फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक सबस्ट्रेटम पे अटैच होके ये एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है. ओके, now come to the second process of asexual reproduction, that is the fission or the fragmentation. Now how does this occur? Suppose this is the sponge body, and this sponge body, in this sponge body we could see this limited area where these cells reside. Now these cells which are present at the outer surface of these sponges, these cells get hypertrophied. That means hypertrophy of these cells occur. That means enlargement of these cells occurs. These cells does not grow into number. Their number does not increase, but their size gets increased. And that enlargement of the cells is known as the hypertrophy. So, in this particular area of these sponges, in this particular limited area of these sponges, the hypertrophy of the cells could be seen. Now, because of this hypertrophy phenomena, the shape of the sponges gets distorted, the size of the cells get enlarged, or the enlargement of the cells occur, due to which the part of the sponges in that limited area starts to weaken, and there comes the line of weakness where the stretching of the body of the sponges occur. The sponge's body starts to get weakened, and that particular part at that particular stretching where the enlargement of the cells have occurred, that is known as the line of weakness. And through that line of weakness, the splitting occurs. Splitting along that line of weakness occurs, and the portion of that limited area of where the hypertrophy has been seen gets detached from the parent body into the, and it gets separated into the, it gets separated from the parent body. That is, the part is separated from the parental body, and that particular part then develops into the new individual. Now let us see the whole process. The sponge is hypertrophied over a limited area, develops a line of weakness. Along this line, weak line splitting occurs. Part is separated from the parent body and develops into new individual, as I have told you. So, फिशन और फ्रैगमेंटेशन के टाइम क्या होता है कि ये जो हमारी स्पॉन्ज बॉडी है, इसमें एक लिमिटेड एरिया में, कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी एक लिमिटेड एरिया में क्या होता है कि सेल्स हाइपरट्रॉफी शो करने लगती हैं, मतलब कि सेल्स का इनलार्जमेंट होने लगता है. हाइपरट्रॉफी की बात करें तो हाइपरट्रॉफी का मतलब है किसी भी चीज का इनलार्ज होना. तो यहाँ पे सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, दैट मीन्स कि सेल्स जो हैं हमारी इनलार्ज हो रही हैं, स्पॉन्जेस की सेल्स इनलार्ज हो रही हैं. और जैसे ही सेल्स इनलार्ज होती हैं इन लिमिटेड, कहीं पे भी इनकी बॉडी में लिमिटेड एरिया में, वो पोर्शन क्या होता है,
वीक होने लगता है, और वहाँ भी जो बॉडी होती है स्पॉन्ज की वो एकदम इरेगुलर शेप की हो जाती है और वीक हो जाती है, और वहाँ पे स्ट्रेचिंग अकर हो जाती है। और उस स्ट्रेचिंग के टाइम क्या होता है, एक लाइन ऑफ वीकनेस जनरेट हो जाती है कि हाँ, ये पोर्शन जो स्पॉन्ज की बॉडी का है वो एकदम वीक हो गया है, ठीक है। और जहाँ पे ये होता है लाइन ऑफ स्ट्रेचिंग जहाँ पे शो होती है, वहीं से क्या होती है, जो बॉडी होती है स्पॉन्ज की वो वहाँ से कटना शुरू हो जाती है, सेपरेट हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और वहाँ पे स्प्लिटिंग आने लगती है और वो टूट करके बाहर आ जाती है। और जैसे ही स्प्लिटिंग होती है ये पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, और फिर ये एक अपने इंडिविजुअल में ये डेवलप करते हैं। तो यही पूरा प्रोसेस क्या होता है फिशन और फ्रैगमेंटेशन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नाउ थर्ड प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इज द रिडक्शन बॉडीज फॉर्मेशन. Now formation of the reduction bodies leads to the asexual reproduction. Now suppose this is the sponge which is attached to the substratum. Under unfavorable condition means when the condition becomes extreme, like the extreme cold is there, extreme summer is there, extreme conditions, drought condition occurs, any unfavorable condition occurs, the sponges they starts to get disintegrate in adverse condition. And when before getting the disintegration of the sponge's body, what the sponges do, they starts to produce small bodies that is known as the reduction bodies. As the condition becomes unfavorable, now the sponges are aware of the unfavorable condition, and in order to reproduce its own kind, what they do, they starts forming reduction bodies before the disintegration of their body. So after that what happens is that the disintegration of their body occurs, the sponges they get collapsed, but what remains in the environment is their reduction bodies, which will further reproduce into the asexual reproduction occurs in that reduction bodies under the favorable conditions. Suppose now, as we can see here, that this is the disintegration of the sponge's body, it starts occurring, and this is the disintegrate in adverse condition, and the sponge it collapses. So before collapsing, this sponge it starts producing the asexual bodies, that is the reduction bodies. And these reduction bodies, they consist of the outer layer which is known as the pinacoderm. The inner cells of these reduction bodies are known as the amoebocytes, which further differentiate into different type of cells. And in order to protect these cells, the outer covering of the pinacoderm, it consists of these spicules. Now under favorable condition, what happens? These individuals, they grow into the new sponge, grows into the complete sponge. So what is the process? Let us see here that freshwater or marine sponges disintegrate under adverse condition. Sponge will collapse, leaving small rounded balls called reduction bodies. Each body consists of an internal mass of amoebocytes covered externally by pinacoderm, and under favorable condition, reduction body grows into new sponge. So this is all about the reduction body formation. तो होता क्या है कि ये जो sponges हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, ड्राउट हो गया, मतलब सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि ये जो स्पॉन्जेस हैं इनकी बॉडी डिसइंटीग्रेट करने लगती है, इनकी बॉडी टूटने लगती है। तो क्योंकि स्पॉन्जेस ख़त्म होने लगते हैं, इनकी बॉडी टूटने लगती है, तो ये क्या करते हैं, एक रिडक्शन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके मरने के बाद भी, इनके ख़त्म होने के बाद भी इनके जैसे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है उन रिडक्शन बॉडीज से।
तो जब ये एक्सट्रीम कंडीशन में ये जो स्पॉन्जेस हैं ये डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, कोलैप्स होने लगते हैं, तो ये प्रोड्यूस करते हैं रिडक्शन बॉडीज। और ये जो रिडक्शन बॉडीज होती हैं ये कैसे होती हैं कि इनमें एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम पेनाकोडर्म कहते हैं, और अंदर इनमें जो सेल्स होती हैं जो कि होती हैं अमीबोसाइट्स, और ये अमीबोसाइट्स जो फर्दर डिफरेंशिएट करती हैं अदर सेल्स में, और फिर ये एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। और इनको अंदर प्रोटेक्शन के लिए इनमें बाहर की तरफ स्पिक्यूल पाया जाता है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके आउटसाइड एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इन रिडक्शन बॉडीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है चीज़ें सही हो जाती हैं, ड्राउट कंडीशन हट जाती है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हट जाते हैं, तो ये स्पॉन्जेस क्या करते हैं, एक कंप्लीट बॉडी में, एक कंप्लीट स्पॉन्ज में ग्रो हो जाते हैं। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है रिडक्शन बॉडी फॉर्मेशन का। Now we come to the most important process of asexual reproduction is the gemule formation of gemules. Now first let us see the structure of the gemule. As we can see here, the structure of the gemule, it consists of the compact cells as we can see here, and these cells are known as the archaeocytes, and these archaeocytes they are covered by the internal layer, inner membrane, and the external layer, that is the outer membrane. And at the outer membrane these gemmules they consist of the spicules, which is the monaxon spicules, and particularly the amphidisc spicules. And along these layer there is the one opening at one end, there is opening at one end, that is known as the micropyle opening. So this is what all the structure of the gemule, this is the structure of the gemule. Now how this process of gemule formation occurs, let us see. Now when aggregates of archaeocytes, as we all know, that is these are the totipotent cells, laden with reserve food granules forming structure gemmules or internal bud, means that when these archaeocytes they start to collect and they consist of the reserve food granules in them, and these archaeocytes collection is known as the gemule formation or the internal bud, which is present inside the body of an sponge. Sponge produces these gemmules inside its body. That is why it is known as the internal bud. So that aggregation of archaeocytes or the collection of the archaeocytes is known as the internal bud, is the formation of the internal bud or the gemule formation. Now further what happens with that collection of the archaeocytes or the aggregation of the archaeocytes? Now when the collection of the archaeocytes it occurs, suppose these are the archaeocytes, these are collected inside the body of the sponge, which is known as the internal bud or the gemule. These are expelled out from adult sponge during unfavorable conditions like the drought, extreme temperatures. So these gemmules, these internal buds, they start coming out of the body of the sponges under unfavorable condition, as we have talked before, like during the extreme temperatures, during the drought condition, these gemmules they start coming out of the body of the sponges. Now because these gemmules they have to survive in the external environment, so these gemmules they need to have the protection. So this collection of the archaeocytes or the aggregation of the archaeocyte, it consists of the inner and the outer membrane. See, the full grown gemmule is surrounded by protective layer of inner and outer membrane bearing an outlet at one end called micropyle, and that covering it is opened through one end. Suppose this is your like archaeocytes collection or aggregation, which is protected by the inner and outer layer,
but this protection, it has one outlet, one opening, and that particular opening is known as the micropyle. Now this protective membrane are strengthened with a monaxon spicule, and particularly which type it is? It is amphidisc type of spicule. So during unfavorable condition like the cold condition, like the warm condition, the gemulation occurs, means the formation of the gemmules occurs. When the formation of the gemmules occur, they occur during the unfavorable condition like during the cold condition, during the warm condition. So there is one particular phenomena which occurs, that is the during cold condition, the gemmules, they are in a state of hibernation, they hibernate, and during warm condition, the gemmules, they are in a state of estivation, that is they estivate. This hibernation and this estivation, in both condition, the gemmules remain inactive. They remains protected because of the protective layer of the inner and outer layer which has been formed outside the gemmules. So because of them, that they remains protected, but during unfavorable conditions they remain inactive, and that particular condition in the cold environment is known as the hibernation, and in the warm environment it is known as the estivation. Now when the favorable condition arises, like during the summer, basically in April or May, the germination of gemmules occurs, or the gemmules began to hatch. Then that gemmules, they began to hatch, and their leaving contents, that is the archaeocytes, which is being protected by the two layers, and the micropiling end is also closed at that time. But during the favorable condition, that opening, it gets opened, that is the micropiling end, it gets opened, and these archaeocytes which is present in that particular structure, it starts to come out. So it escapes through micropyle and develops into the new spawn. So this archaeocytes, it start coming out of that gemmule structure, and because of its property of the totipotent property, these archaeocytes escape is being able to produce into a new individual. तो अगर हम बात करते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन की, जेम्यूल फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो आर्कियोसाइट्स होती हैं, ये इनका एग्रीगेशन होने लगता है, ये एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं, ये कलेक्ट होने लगती हैं एक जगह स्पॉन्ज की बॉडी में, और क्योंकि इनको बाहर निकलना है, इनको एक्सटर्नली ग्रो करना है, तो इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और उस प्रोटेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट होती हैं, इनको कवर करती हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन से ये आर्कियोसाइट्स कवर होती हैं, और इसके बाद इनमें स्पेक्यूल्स पाए जाते हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जा सके। और पर्टिकुलर स्पेक्यूल की जो हम बात करते हैं, वो पर्टिकुलर स्पेक्यूल है एम्फीडिस्क स्पेक्यूल। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि आर्कियोसाइट है, आर्कियोसाइट में कवर होती हैं आर्कियोसाइट इनर लेयर से, फिर आउटर लेयर से, और इनके आउटर लेयर में जो मोनाक्सन स्पेक्यूल पाया जाता है, पर्टिकुलरली एम्फीडिस्क स्पेक्यूल होता है। और ये जो लेयर होती है, इनमें एक जगह जाके ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइल ओपनिंग कहते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। तो ये जेम्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है स्पॉन्ज की बॉडी में, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल बड कहते हैं, क्योंकि वो स्पॉन्ज के अंदर ये इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे ऑटम, बेसिकली क्या होता है कि ऑटम के सीजन में ये होता है, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पॉन्ज है वो अपनी बॉडी से इन इंटरनल बड्स को बाहर निकालता है, इन जेम्यूल्स को बाहर निकालता है आउटसाइड एनवायरनमेंट में, और वहां पे ये जेम्यूल्स क्या करते हैं, ये सरवाइव करते हैं वहां पे जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये ऐसे ही वहां पे रहते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशन में अगर कोल्ड कंडीशन है, तो ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन स्टेट में चले जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं।
और अगर समर में ये क्या करते हैं, हीट कंडीशन में समर में ये एस्टिवेट करते हैं, एस्टिवेशन स्टेट उसको कहा जाता है, एस्टिवेट करते हैं। और इन दोनों स्टेट में क्या होता है कि ये जो स्पॉन्जेस हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, मतलब कि ये जो जेम्यूल्स होते हैं ये डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, लाइक इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। अभी ये जेम्यूलेशन होता ही है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो जेम्यूल्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, मोस्टली स्प्रिंग सीजन में, लाइक अप्रैल मई के दौरान, फिर से ये जेम्यूल क्या होते हैं, ये जर्मिनेट करने लगते हैं। इनकी जो माइक्रोपाइल एंड है वो खुल जाती है, वहां से जो आर्कियोसाइट्स हैं वो बाहर निकलने लगती हैं। और आर्कियोसाइट्स बाहर निकल के वो क्या करती हैं, क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल होती हैं, तो वो एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और एक नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन वो कर देती हैं। और ये जो जेम्यूल फॉर्मेशन होता है ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। तो यही प्रोसेस है पूरे जेम्यूल के फॉर्मेशन का। Now let us come to the one more important topic of the sponges is the regeneration in sponges. Regeneration means to generate again. So animals that can replace their lost or injured parts, then this process is known as the regeneration. Means animals in which their body parts has been lost or it has been injured. So the animals, they have the capability of replacing that lost or injured part. That very much process is known as the regeneration. And regeneration is particularly found in the simple organisms like the sponges, because in higher organisms or the modified organisms, the phenomenon of regeneration is not seen. So in this individual carrying cells, means the individuals having the cells like the amoebocytes or the choanocytes, so that very much individual, it cut into pieces. Each piece will grow under unfavorable condition. That means suppose this is a small simple body की अगर हम बात करें, सो सिंपल बॉडी लाइक द स्पॉन्जेस की हम बात करते हैं, तो स्पॉन्जेस को हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, ठीक। तो हर एक छोटा पीस जो है स्पॉन्जेस का, उसमें क्या पाई जाती हैं, कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, अमीबोसाइट्स और द क्वानोसाइट्स। अगर ये सेल्स हैं इंडिविजुअल में, अमीबोसाइट्स और द कॉनोसाइट्स, तो उनका हर एक कटा हुआ पीस, every individual piece is capable of growing into a full or complete sponge under favorable condition. Favorable condition में that each pieces will continue to grow into a complete sponge. And this very much process of regeneration has been verified by a scientist known as the H.V. Wilson in 1907. तो हर एक पीस वो जनरेट हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है इनटू न्यू इंडिविजुअल में, कंप्लीट स्पॉन्ज में, और उसके लॉस्ट पार्ट को या फिर इंजर्ड पार्ट को भी वो बना देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रीजनरेशन। और इसको वेरीफाई किया था, इस प्रोसेस को वेरीफाई किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है H.V. विल्सन, इन 1907 में। Now let's have a look on Wilson's experiment on regeneration. Now what is that Wilson has shown in this particular experiment? It is a very interesting experiment and a very simple experiment, in which what he did is that sponge chopped in small pieces, as we can see here, sponge is chopped into small pieces, and the sponge, the small pieces, it runs through meat grinder or the mixer grinder, anything you can say, so that small pieces of the sponges, they have been run through that particular grinder, and after that the particular pieces, they were squeezed through fine silk blotting cloth, and cells separates from one another, and that particular mixture of cells, the pieces, that the cells that are present in that pieces are the amoebocytes and the choanocytes.
amoebocytes and the quenocyte cells could be seen in that particular mixture after the grinding process. Now what happens, these amoebocytes or the quenocytes, these cells, they start getting cluster of cell masses occur. The cells, they start preparing their clusters and mass reunion. And what happens, the mass reunion occurs, starts forming their mass, and formation of spongulate, and that united mass, it forms the spongulate, that particular body of the united mass of the cells, either of the amoebocytes or of the quenocytes. They started forming this formation of a body that is known as the spongulate, and this spongulate again will continue to grow into the full grown sponge body or the individual body. So विल्सन एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया, विल्सन एक्सपेरिमेंट ने कहा कि अगर हम स्पॉन्ज की बॉडी को लेते हैं और उसको हम स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं और कट करके हम उसको मिक्सर ग्राइंडर या मीट ग्राइंडर में उसको हम ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर जो मिक्सचर आया उस मिक्सचर को हमने क्या किया, उसको एक सिल्क क्लॉथ में ले लिया और उसको सारे मिक्सचर को जो पीसेस हैं जो ग्राइंडिंग के बाद जो निकले हैं उसको हमने क्या किया, उसको सिल्क क्लॉथ में रख करके उसको स्क्वीज किया, क्लॉथ को स्क्वीज किया, तो उसमें से हमें सेल्स मिली, अमीबोसाइट्स और क्वेनोसाइट्स। ये जो मिक्सचर ऑफ सेल्स मिली अमीबोसाइट्स और क्वेनोसाइट्स की, ये फिर क्या करने लगी, ये धीरे धीरे क्लस्टर्स फॉर्म करने लगी एक पर्टिकुलर मीडिया में उन्होंने देखा कि सपोज ये है एक पर्टिकुलर मीडिया उन्होंने प्रिपेयर किया और उस पर्टिकुलर मीडिया में ये सेल्स जो हैं वो जो पहले ग्राइंडिंग के बाद जो आई थी वो सेल्स अब ये क्या करने लगती हैं, क्लस्टर बनाने लगती हैं और धीरे धीरे क्या करती हैं, ये जो क्लस्टर होता है ये क्लस्टर जो है मिल करके एक स्पॉन्जुलेट का फॉर्मेशन कर लेता है, एक न्यू बॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जुलेट। ये सारे क्लस्टर्स रीयूनाइट हो जाते हैं और रीयूनाइट होके ये एक बॉडी का फॉर्मेशन करने लगते हैं जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जुलेट। और ये जो स्पॉन्जुलेट बॉडी होती है ये फर्दर क्या करती है, एक नए स्पॉन्ज को बनाने में हेल्प करती है, एक नए स्पॉन्ज का ये फॉर्मेशन कर देती है। So this was all about the asexual reproduction in sponges, in which we have talked about the several processes of asexual reproduction like the budding process, fission process, fragmentation, or the gemule formation, which is the very much important process of asexual reproduction in sponges, and the reduction body formation, and we have again covered the topic of regeneration and the Wilson experiment. So I hope you understand this lecture, and please go through my all previous videos in order to understand more. और हम ये बताना चाहेंगे कि इस सीरीज में जो फाइलम पोरिफेरा की जो सीरीज थी ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस पर्टिकुलर सीरीज की, जिसमें हमने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। हमने स्पॉन्जेस के जनरल कैरेक्टर्स, उनके कनाल सिस्टम को हमने डिस्कस किया है डिटेल में, हमने स्पेक्यूल्स के डेवलपमेंट को डिस्कस किया है, रिप्रोडक्शन में दोनों एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस किया है। सो आप ये सारी वीडियोस जाके देखिएगा, उसको समझिएगा, और कुछ अगर कुछ आपको लगता है कि हमें पोरिफेरा में और कोई टॉपिक भी कवर करना चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और नेक्स्ट जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो हम सिलेंट्रेटा फाइलम की सीरीज़ हम शुरू करेंगे। और please do the subscription, do like and share, and please give your feedbacks so that I can improve on my part. So thank you so much.